ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अस्माकम् अद्यतनविषयः अस्ति सप्तविंशतिः अभ्यास नम्बर् 27, पृष्ठक्रमाङ्कः 54, 54, पेज् 54, अभ्यास 27। प्रथमः संज्ञाशब्दानि क इति संज्ञाशब्दानि। नामन् नाम नेम, प्रेमन् प्रेम लव, नाम प्रेम, व्योमन आकाश स्पेस अथवा ईथर, ऑल आर नपुंसकलिंग। अनंत नपुंसकलिंग शब्दानि सन्ति। स्वर्णकारः सुनार, इन इंग्लिश गोल्ड स्मिथ। लौहकारः लोहार, ब्लैक स्मिथ आयरन। चर्मकारः चमार, दिस इज दैट कॉबलर शूमेकर। कुंभकारः कुम्हार, दिस इज पॉटर कुम्हार। रजकः धोबी लॉन्ड्री पर्सन। नापितः नाई बाल काटने वाले ओ बार्बर। व्याधः बहेलिया इज हंटर शिकारी हंटर। क्षुरः उस्तरा, क्षुरः स्वॉर्ड अथवा रेजर जैसे कठोपनिषदि। Khadga Shiva came in brother in it also. Khadga came also. Must be. Yeah, Shura also came. Shura comes in Kathopanishad, that 1314. Uttishtata, Jagrata, Prapya Varan, Nibodata, Kshurasya Dhara, Nishita, Duratyaya. Kshura, 1.3.14 Katha. Kshura, sword or razor. Ustra. Rituhu, Ritu, season. Now, ka dhatu shabdani. Prakshal, prakshali is dhona, like washing. Like how in yoga we have shankha prakshalan, to wash the whole body, drink and then take out, so the whole gut is cleaned. Dhona, prakshalan, prakshali, to wash, to cleanse. Preri, prerna dena, to inspire, give inspiration, prerna. Tad, tadi, peetna, hit, beat up. Dhari, रखना अथवा पहनना, रखना to keep, पहनना to wear. स्थापि रखना, जैसे स्थापित, मंदिरम स्थापितः अस्ति, स्थापितः to keep, to establish, to put somewhere like. कृत काटना, to cut. Then विशेषण शब्द are there. ह्यः, this we have seen. ह्यः बीता हुआ कल, भूतकाल. श्वः आगामी कल, tomorrow, yesterday and tomorrow. Shvaha, hayaha, shvaha. Yaha vayam apashyama. Hya vayam apashyama, abhyasa षड्विंशति. Shvaha anadhyaya asti. Like that. नामन, व्योमन नामन के तुल्य, प्रक्षल स्थापि चुर के तुल्य, चुरादिगना, चुर धातु. नामन शब्द के पूरे रोज स्मरण करो. अहम पठामि 31, एक शब्द संख्या 31 इति पृष्ठक्रमाङ्कः 3 सप्ततिः
Page 81 has all this, I think. त्रिसप्ततिः. नामन, नामन, नाम अन्नंत नपुंसकलिंग शब्द अस्ति. वैसे गृह. नाम, नामनि, नामानि प्रथमा. द्वितीया नाम, नामनि, नामानि. नपुंसकलिंग शब्दानि बहु शब्दानि नपुंसकलिंगे प्रथमा द्वितीया च समानं सन्ति. नाम्ना तृतीया नाम्ना नामभ्यां नामभिः. चतुर्थी नाम्ने नामभ्यां नामभ्यः. पंचमी नाम्नः नामभ्यां नामभ्यः. षष्ठी नाम्नः नाम्नोः नाम्नाम्. सप्तमी नाम्नि नामनि. नाम्नि अथवा नामनि नाम्नोः नामसु. संबोधन हे नाम हे नामन् अथवा हे नाम अथवा हे नामन्. द्विवचन हे नामनि. बहुवचन हे नामानि. इति शब्दं व्योमन्. व्योमन् शब्द इति उपनिषदि बहु सा प्रयोगः अस्ति. व्योमन् शब्द व्योम्ना व्योम्ने इति वत्. देन् आकाश स्पेस तथा ईथर महाभूत. न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु. जैसे न च व्योम. Vyoma, that will be Prathama. I am not Vyoma. Prathama ekavachana. Like Nama. Nama Vyoma. Or it can even be, it will be Prathama Dvitiya ekavachana. Wherever it is used as Vyoma. Okay. प्रक्षल आदि के ये रूप बनाकर भवती के तुल्य रूप चला प्रक्षालयति. तो अहम प्रक्षालयामि. सः प्रक्षालयति. सः प्रेरयति. He gives inspiration. सा प्रेरयति also. She gives inspiration. ताडयति, धारयति, स्थापयति, कृन्तति इति इत्यादि. प्रक्षालयति, प्रक्षालयतः, प्रक्षालयन्ति. प्रक्षालयसि, प्रक्षालयतः, प्रक्षालयथ. प्रक्षालयामि, प्रक्षालयावः, प्रक्षालयामः इति लट् लकारे. ह्यः और श्वः के अंतर के लिए ये स्मरण कर लो. दिस ह्यो गते नागते ह्निश्वः. दिस इज फ्रॉम अमरकोश टेसॉरस. ह्यो गते अनागते अह्निश्वः. ह्यो गते नागते ह्निश्वः. ह्यो गते गतवस्तु भूतकाल ह्यः. भविष्यकाल अनागत श्वः. ह्यो ह्यः इज भूतकाल. भविष्यकाल श्वः. Like this is ह्यो गता. अनागत अग्नि श्वः. ह्यो गता गतः. अनागतः अग्नि श्वः. Agni. Agni means day, right? The day which is to come. I will check this. I think Agni means day. I will anyway check and confirm. Yes. Aharaha. Correct. Brihadaranya करके. Aharaha. Yes. बीते हुए दिन के लिए ह्यः. आगामी के लिए श्वः. सिंपल. श्रु धातु के विधिलिंग और ऋट के रूप स्मरण करो. अहम पठामि. धातु संख्या 29 पेज 98 आई थिंक. राइट. 98 इज अष्टनवतिः. 98. श्रु धातु विधिलिंग ऋट. विधिलिंगे शृणुयात्, शृणुयातां, शृणुयुः. शृणुयाः, शृणुयातां, शृणुयात. शृणुयाम, शृणुयाव, शृणुयाम. लिट लगारे. श्रोष्यति, श्रोष्यतः, श्रोष्यन्ति. श्रोष्यसि, श्रोष्यतः, श्रोष्यथ. श्रोष्यामि, श्रोष्यावः, श्रोष्यामः. एक प्रश्न अस्ति. हरिजी भवान् वदतु कृपया. लिट लकारे सः डैश. he is listening. he will listen. सः किं भवति? हरिजी भवान् वदतु कृपया. लिट लकार श्रु धातु. सः डैश. सः श्रोष्यति. सम्यक्. बहु सम्यक्. अवंतिका जी, भवती वदतु त्वं. त्वं किं भवति? ईजी.
त्वं श्रोष्यासि. श्रोष्यसि, वेरी ईजी, बहु सम्यक्. सन्ध्याजी भवती वदतु अहं लिट्टकारे अहं. सन्ध्याजी भवती कृपया अहं. 1 second, I am unmuted. अहं श्रोष्यामि. सम्यक्, अहं श्रोष्यामि. सुन्दरजी विधिलिङ्गि आवां. शृणुयाव. सम्यक्. So like this we can easily understand. Okay. Panchama Vyakarana, page 54 again. Panchashat. पंचमा व्याकरण पंचमा. 6 ऋतुएं और 12 मास ये हैं: वसंतः, ग्रीष्मः, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिरः. इन इंग्लिश वसंत, बिकॉज हिंदी इज ऑल इजी. वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु. वसंतः स्प्रिंग, ग्रीष्मः समर, हर्षा मानसून, शरद फॉल अथवा ऑटम, हेमंतः इज बिफोर विंटर, जैसे नवंबर डिसेंबर. हेमंतः, शिशिरः विंटर, जनवरी फेब्रुवरी. 12 मास: चैत्रः, वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढः. कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? नास्ति. 12 मासः 12 मासः: चैत्रः, वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढः, श्रावणः, भाद्रपदः, आश्विनः, कार्तिकः, मार्गशीर्षः, पौषः, माघः, फाल्गुनः. So April 15 to May 15 will be Chaitraha, like that. Okay. In April 15, May 15 in the Gregorian calendar. Niyama Ashta Shashtihi, 68. Kharicha. So now we come to Sandhi. Sandhi we will see. So I will share screen also for Kharicha. एकनिमिषः. खरीच इति सूत्रसंख्या 8455. खरीच इज वेरी सिमिलर टू ह्यः. यः वयम् अपश्यामः झलां जश्जसि. खरीच अपि बहु समान इति अस्ति, समानवत् अस्ति, नॉट एग्जैक्टली समान. इन झलाम जश जशी विसा वर्ग के 1 2 3 4 को तीसरी हो जाता है. सो फॉर एग्जाम्पल बुद्धि ही द केम, त दकार. एंड फॉर एग्जाम्पल धुग प्लस धम, धुगधम केम, गकार. सो द थर्ड वन केम. खरीच इज सेइंग वर्ग के 1 2 3 4 को 1 हो जाता है, उसी वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है. जैसे बाद में वर्ग के 1 2 स कोई हो तो. सो इन झलाम जश जशी, इफ द सेकेंड वर्ड बिगिंस विथ थर्ड एंड फोर्थ अक्षर ऑफ दैट वर्ग, जैसे ग घ द ध प ब भ जैसे, देन इट विल बी द थर्ड अक्षर. इन खरीच, इफ द सेकेंड वर्ड बिगिंस विथ फर्स्ट और सेकेंड, त थ क ख प फ वैसे, if it is like that then it will become the ta. So they have given example, जैसे सदकारः सत्कारः. So they have given here, if you see screen, झल वर्ग चतुर्थः, वर्ग तृतीयः, वर्ग द्वितीयः, वर्ग प्रथमः प्लस ऊष्माणः, और ऊष्माणः will come in 2 days, so we'll see then. All this is झल. And khar is varga dvitiyah, varga prathamaha, sh, sa. This is called khar. So kharicha is for khar. Examples: bhaj, bhak plus ta, bhakta. Ka dhat, ka varga, to ka has come, ka has been added, bhakta. Dat plus ta, datta. Labsyati, lapsyati. Lapsya has become lapsya. It has become adha. Vrinch, an ear, vrinchaniya.
our book has better examples, so we will see the examples given in Prarambhik Rachanamala Kaumudi. Actually, in our book, the examples are all only with the. हाँ, we will put some other examples we can try. जैसे बुक में they are given पुस्तके सद्कारः इति सत्कारः, the, that is the has come, so the has become ta because the is in tavarga. Tadparah tatparah, it has come, it is in this, it is the prathama akshara of tavarga, so it has come. Ud saha utsaha, sadputraha satputraha. There is one example there. So in Jhalam Jash Jashi, Sat plus Janaha it didn't become Sat Janaha, it became Sat Janaha. Tritiya akshara, Ja. But Sat plus Paraha here will be Sat Paraha, or Sat plus Karaha, Satkara, not Sajkara. Prathama akshara. This is the difference. And depending on the word, letter in the second word, the Kharicha or Jalam Jash Jashi will apply. You can see some other examples like Sadputra, Ga. Tag plus Karaha will become Takkaraha, like that. Tatkal booking. Tatkal, but Tatkal is Tatkal, this Kal. But there are other examples that if there is Ga, that will become Ik, because Kavarga. If there is the, that will become It, because Tavarga. These are all easy sandhi, easy sutras, so we don't have to spend too much time. I'll ask a question also now itself. Hariji Bhavan vadatu sad karma. Kim bhavati? Sat karma. हाँ, sad karma. Avantika ji sad patram. Patram. Sat patram. Patram. Sat patram. हाँ, सुंदर जी उदकृष्टः. उत्कृष्टः. संध्या जी उत्साहः. Utsaha. Utsaha. So everything is so simple in this. The has become it. But like that you can also, we can assume that, for example, in Kavarga, Ga will become Ik. In Pavarga, Ba will become Ip. Like Lapsyamahe. Lapsyamahe is Labh Dhatu. Shraddhava Labhate. But it will become Lapsyamahe. Ip. Like that, there are other examples. Okay. When it will be decided, it come Ja or Ta. Ta, you have given example, as you say, Sajjana. So, why they have taken Ja, not Ta there? Because it depends on the second word. Janaha, Shabda begins with Ja. Here, Karaha begins with Ka. Janaha is the Tritiya akshara of Tavarga, that is Chavarga. Cha, Cha, Ja. But here they are given Kara. Kara is Ka is first Prathama akshara of Kavarga. Or we'll take some other example. Janaha, Sajjanaha example came. Or Utsaha, Sa is not. But Sa is not the first, but Sa is included here. Na? In Karicha, Sha, Sa also is there. Also there. Yeah, correct. No, but there is one more example maybe we can give for Avantika ji's question. Satputraha, Pa, this is first. But if it were Ba, like Satbhrata, it become Sabhrata. It depends on the second Vakya, second Shabda. The first letter. Oh, second Shabda. Okay. Janaha. So what come next? Exactly. Next word. Next Okay, word. okay. Like, see, Sat plus Janaha became Sat Janaha because of the Ja in Janaha. Second word. And Satkara has become Satkaraha, not Sakkaraha. Satkaraha because of the Ka there. If Sajjanaha example is taken, then Satkara should become Sagkaraha. But it is not Sagkaraha, it is Satkaraha. This is Kharicha. Satkaraha, Kharicha. Sajjanaha, Jhalam Jash Jashi. Second word matters. नियम 169 आत्मनेपदी धातुओं के लट के स्थान पर शानच प्रत्यय आन हो जाता है. यस्टरडे यह वयम अपश्याम शत्रु प्रत्यय. शत्रु प्रत्यये
लंग लकारे शत्र प्रत्यय लंग लकारे रहा है रहा था आदि रहा वाला प्रयोग शत्र अथ हुआ. सो लाइक पठन भगवत शब्द भगवन. सो पठन सह पठन अस्ति. दैट पर्सन इज स्टडीइंग. और सह पठन आसीत ही वाज स्टडीइंग. हियर इट इज शानच प्रत्यय. सो इट विल बिकम what will be there is मान. they have given example, we will see. शानज का आन शेष रहता है, कहीं पर मान रहता है. शानज प्रत्यांत के रूप पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंग में रमावत, नपुंसकलिंग में गृहवत. शत्रु के तुल्य शानज में भी अर्थ के अनुसार अस धातु का प्रयोग करो. जैसे they will themselves give. शानज के बने रूपः वर्तते इति वर्तमानः, not वर्ततः. और वर्तन वर्तन इति शत्रु प्रत्यय like पठन. but here they again वर्तमानः वर्तमान काल present वर्तमानः. यजते is यजमानः शानच प्रत्यय यजमानः. वर्धते वर्धमानः. मोदते मोदमानः. सहते सहमानः. these are not sahan sahat sahani sahati, none of those. it is sahamanah. this is the difference between shatru and shanach. शत्रु प्रत्यय इन परस्मै पद, शानच प्रत्यय आत्मने पद. याचते याचमानः. ओके, कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? When would we use the shan? Because shanach pratyaya Swamiji Here quotes all the time. the examples in our उदाहरण वाक्य. Yeah. हाँ, like मन्यमानः, right? अविद्यायामन्तरे वर्तमानः. Yeah. स्वयं धीराः पंडितं मन्यमान. वर्तमान मन्यमान both are shanach. Shanach. They are both shanach. The person who is led by the blind, Yeah. that is avidyayam antare vartamana, right? The one who follows avidya is like blind leading the blind. Where will they reach? But the word there vartamana doesn't mean present like vartaman. Manyamanaha, it is like the person that who has avidya Yeah. in this at this time. At this Vartamana. time. Vartamana. Ha. Okay. Swayam dhiraha panditam manyamanaha. Manyamana, correct. Ha. So that is their shanach pratyaya example. There will be many other examples, but here is that is one example. This comes very often. ओके, उदाहरण वाक्य. वह मांग रहा है, स याचमानः अस्ति. सो हिंदी और इंग्लिश. हरिजी भवान् वदतु कृपया प्रथमः. स मोदमानः आसीत्. किं भवति? सः मोदमानः. सः is he is happy. He remains happy, continues to be happy. आसीत्. Modama continues to be happy. आसीत् भूतकाल लंग लकार. Oh, lang. हाँ, आसीत् आस्ताम आसन. आसीत् is past tense. So You want me to say the past tense? Oh, sorry. Yeah. Let me look at the word. yeah, स मोदमानः आसीत् will be वह मांग रहा है. वह मांग रहा है, स याचमानः अस्ति. मांग रहा है. सः मोदमानः आसीत् will be रहा था. Okay. He was getting happy. Okay. He was Asid. getting- Okay. हाँ. Asid. Okay. मोदमानः. हाँ, भवानेव वदतु. हरिजी भवानेव. अहं वर्तमानः आसम्. किं भवति? Myself. Vartamana meaning of Vartamana is. I am here. That is here, existing. Awesome. I continued to be here. I was here. आसम. हाँ, हो रहा था. विद्यमान I was- हो रहा था. वर्तमान हो रहा था. So it would be I was being there. वर्तमान हो रहा था. I was there. I was there. It is like सा प्रसन्न हो रहा था, right? For मोदमानः, he was getting happy. So I was being there, like that. अवंतिका जी भवती वदतु. स्वल्प कष्टः अस्ति, परन्तु you can do it, I think. मयि वर्तमाने कः एतत् कर्म कुर्यात्? मेरे रहते हुए किसने यह कार्य किया? हाँ, किसने कुर्यात्. कुर्यात् कुर्याताम कर सकता है. मेरे रहने पर कौन ये काम कर सकता है?
मयि वर्तमाने कः एतत् कार्यं कुर्यात्? Nobody can do. He is asking like that. कः कुर्यात्? Who is able to do? क्या कर सकता है? बहुत सम्यक्. हाँ, अवंतिका जी भवती एव वदतु कृपया. तव किं नाम अस्ति? उसका नाम क्या है? तव सॉरी तव कभी नहीं याद आ रही मुझे भी. तव ते युष्मद् शब्द. आपका, तुम्हारे. तव अच्छा, तुम्हारे. आपका नाम क्या है? षष्ठी विभक्ति त्वम. हाँ, युष्मद् शब्द षष्ठी विभक्ति. तव नाम किम? व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? तुम्हारा नाम. आपका विल बी भवान, तुम्हारा राइट? हाँ, तुम्हारा नाम तव किं नाम? सी बहु सम्यक्. हाँ, सुंदर जी वदतु भवान्. मम नाम देवदत्तः अस्ति. So my name is Devata. Devadatta. हाँ, this is easy. This is also easy. Next किं भवति? सर्वेषु प्रेम कुरु. Prem Guru. So lot lakara. लोट लकार. So love everybody. सर्वेषु प्रेम कुरु. हाँ. संध्या जी भवती वदतु. व्योम्नि पक्षिणः सन्ति. व्योम्नि पक्षिणः सन्ति. किं भवति? पक्षी है. वो पक्षी है. व्योम इज आकाश. व्योम्नि. अच्छा, आकाश में पक्षी है. सम्यक, बहु सम्यक. आकाश में पक्षी है. एंड भवती एव वदतु. संध्या जी भवती एव. सप्तमी आकाश में. हाँ. राजकः वस्त्राणि प्रक्षालयति. राजकः. No, I'll try. वस्त्राणि. राजा के वस्त्र धो. राजकः इज धोबी. धोबी इज राजकः. अच्छा, ओके. हाँ. धोबी वस्त्र धोता है. हाँ, सम्यक, बहु सम्यक. धोबी वस्त्र धोता है. राजकः. Where we got this word Rajaka previously, right? राजकः is here ना. अभ्यास 27 third line. क शब्द थर्ड लाइन. राजकः धोबी. पेज 54. हाँ, वस्त्राणि शब्द केम बिफोर ऑफ कोर्स. वस्त्रों को धोना. हाँ, करेक्ट. ओके. हरि जी भवान् वदतु. नापितः क्षुरेण केशां कृन्तति. The barber is cutting the hair with the scissors. सम्यक, बहु सम्यक. बहु सम्यक. हाँ, विद द दिस रेजर. हाँ. अवंतिका जी भवती वदतु. वर्षे 6 ऋतवः 12 मासाः च भवन्ति. एक साल में 12 महीने होते हैं. 6 ऋतवः. सॉरी, 6 ऋतु होते हैं. हाँ, 6 ऋतु और 12 मास और 6 ऋतु होते हैं. ऋतु को मुझे याद नहीं आ रहा है. सम्यक. ऋतु ही है. ऋतवः बस. हाँ हाँ, सब बहु सम्यक, बहु समीचीनं. सुंदर जी. स मधुरं वचनं शृणुयात्. त्वं शृणुयाः. अहं शृणुयाम्. अहं च शृणुयाम्. So therefore it is so please listen to Madhura Vachanam, sweet words. Shuniyat. So Shuniyat is past. So he heard. मैं सुने. हाँ, he heard. You can he heard. So Madhura. So he heard sweet words. But Shrunuyat is Vidhiling, right? Shrunuyat, you check. Is it Vidhiling? Shrunuyat is Vidhiling. हाँ. सुनना चाहिए. सम्यक. शृणुयाः. तुम स्वं शृणुयाः. अहं शृणुयाम्. All Vidhiling. तीनों Vidhiling. ओके. संध्या जी भवती वदतु. स भाषणं श्रोष्यति. भाषणं आप सुनो. तुम सुनो. Sorry, not तुम. Saha is he. He.
Okay. He will listen. हाँ. We have to listen. He listens to भाषणम. श्रोष्यति is Listening. कस्मिन् लकार अस्ति श्रोष्यति? श्रोष्यति. सुन रहा है. Present. Present is lat lakara. श्रोष्यति प्रसन्ना नास्ति. लट् लकार नास्ति. लट् लकारे शृणोति. श्रोष्यति Lot present. लिट्. See one. Okay, future. Future. One easy way is there to understand. In any abhyasa, they give lat, lot, and lung together, and vidiling and lit together. So today is vidiling and lit. So lat, lot, and all will not even come in the questions. Like, see, yesterday we did lat, lot, lung. So yesterday only lat, lot, and all came. Today vidiling and lit. So everything will be vidiling, lit. The Sundarji also is saying lung. Yeah, lung went yesterday. So today every question will be either in vidiling or lit only. Simple shortcut is there. But samyak, बहुत सम्यक. हरि जी संस्कृत बनाओ. एक एक करेंगे हम. वह प्रसन्न हो रहा है. हो रहा है. किं भवति? सः प्रसन्न हाँ. और प्रसन्न मोद धातु. मोद धातु. प्रसन्न पश्यतु भवान पश्यतु. द्वितीय उदाहरण वाक्य भवान पश्यतु. उपरि मोदमान अस्ति. मोदमानः अस्ति. सम्यक्. मोदमानः अस्ति. सः मोदमानः अस्ति. हाँ. अवंतिका जी भवती वदतु. वह मांग रहा है था. सः बहुत सम्यक्. मांग रहा था. याच. मांगना. सम्यक्. सः याचमानः. हाँ. याचमानः यानी हमें यहाँ पे शानच यूज करना पड़ेगा. सम्यक. शानच. हाँ, शानच यूज कर रहे हैं. तो शानच के बिना कैसे होगा? शानच के साथ कैसे होगा? आप ही बताइए. ठीक है. वह मांग रहा था. वह मांगना यानी याचना. मांग रहा था. वह भूतकाल था. भूतकाल. याचक नहीं पता. कोई बात नहीं. ये एक्चुअली वी हैव नॉट सीन ना. ये तो मांग रहा था. वी ओनली सॉ मांगता था. मांगता था तो भूतकाल में नहीं आएगा ना. हाँ, ये रचनानुवाद कौमुदी में आएगा. दूसरे लकार है. नॉट टुडे. सः याचमानः. याचमानः. शानच में तो डिफिकल्ट जा रहा है. याचमानः. सम्यक्. याचमानः किं भवति? था इस रहा था. सो याचमानः. हाँ. सः याचमानः. सः भवान् भवती उदाहरणवाक्ये प्रथमवाक्ये पश्यतु. भवती प्रथमवाक्ये किं भवति? किम् अस्ति? वह प्रसन्न हो रहा था. दट इज द्वितीय. प्रथम वह प्रसन्न हो. फर्स्ट सेंटेंस ना. उदाहरण वाक्य में. नॉट संस्कृत बनाओ. उदाहरण वाक्य ऊपरी. ओके सॉरी. वह मांग रहा था. सः याचमानः अस्ति. ओके अस्ति. तो इसमें स्थः आएगा. हाँ. अस्ति आसीत् आएगा. आसीत्. सम्यक. गुड. easy. We can do little shortcut like this. सः याचमानः आसीत्. वो मांग रहा था. हाँ. सुंदर जी भवान वदतु. ख के प्रथम. What is that? वह भाषण सुने. सः भाषणम. हाँ. सुने. So शृणुया. सः शृणुयात्. सः भाषणं शृणुयात्. सम्यक्. संध्या जी
भवती वदतु किं लास्ट अन्तिम मैं सुनूंगा संस्कृते संस्कृतभाषायां किं भवति अहं शृणोति सुनूंगा इस् कस्मिन् लकारः मैं सुनूंगा is I'll listen present. I will listen is future. Is it present? No. Okay, sorry. Future. Future. Lit lakara. Lit lakara. अहं श्रोष्यामि सः श्रोष्यति अहं श्रोष्यामि है ना सम्यक् अहं श्रोष्यामि. This shanach pratyaya tripping us up, but it's okay. It happens in some pratyayas. These things happen. Ashuddha to shuddha. Namah premam vyome nai. Nama prema vyomni. Nama prema vyomni. Nama prema prathama dvitiya. Vyomni saptami asti. Dvitiya ashuddha vakya kumbhakaraha ghata prithvim sthapayati. Ashuddha. Shuddha vakya kumbhakaraha ghatam. घटम द्वितीया विभक्ति घटम पृथिव्यां स्थापयति. घटम नपुंसकलिंग शब्द है. पृथिव्यां स्थापयति इन पृथ्वी हाँ पृथिव्यः राइट लाइक नदी शब्द. पृथिव्यां नद्यां पृथिव्यां सप्तमी विभक्ति अस्ति. ओके अभ्यास 2 ख को बहुवचन में बदलो. वी कैन डू 1-1. हरि जी अंतिम अभ्यास. हरि जी भवान् वदतु तू सुन बहुवचने यू लिसन. बहुवचने किं भवति विधिलिङ्गि. तू सुन 25 पंचविंशति. Okay, two is यूयम बहुवचने शृणुयात्. यूयं शृणुयात् विधिलिङ् लकारे शृणुयात्. यूयं शृणुयात् सम्यक् शृणुयात्. अवंतिका जी भवती वदतु मैं सुनूं बहुवचने अहं सुनूंगा. सुनना चाहिए. शृणुयाम अहं शृणुयाम. सुंदर जी वह सुनेगा बहुवचन. वह सुनेगा. So therefore, ते सुनेगा. सुनेगा लिट् लकार श्रोष्यन्ति. ते श्रोष्यन्ति. संध्या जी भवती वदतु तू सुनेगा बहुवचन. यूयं is future. सम्यक् श्रोष्यथा. बहु समीचीनम् अस्ति. So little difficult, but if we do little practice, it's very easy. So any कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? अद्यतनविषयः आसीत् खरि च सन्धि च शाणच् प्रत्यय. श्वः अनद्याय गुरुवारे वयं मिलिष्यामः. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः. शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः.
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम वयं मेलिष्यामः, नॉट मिलिष्यामः, मेलिष्यामः। ओके, थर्सडे। ओम।